Two parts. Okay. Plant is divided into two parts, right? First one is cryptogam and phanerogams. Phanerogams. Cryptogam means what, students? Seeds. Seeds are exposed or seeds are enclosed? And no, exposed. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, please. Okay. So phanerogams means cryptogams means what, bacha? Seeds are visible or not visible? Crypto stands for hidden. Hidden, ma'am. Return. Okay. And phanero stands for visible. Please remember this one thing. Then crypto is further divided into non-vascular and vascular. Vascular. Non-vascular means what? Absence of vascular bundle. That is nothing but xylem and phloem, correct? Which are the conducting tissue for conduction of water and food. And vascular means presence of this vascular bundle, that is xylem and phloem, right? Yes, ma'am. So non-vascular is further divided into, what are the examples of non-vascular? That is, the first one is thallophyta. Bryophyta. And the next one is bryophyta. And the first vascular terrestrial plant body, the name of that is pteridophyta. Yes. Now the phanerogams, that are the visible things or hidden. Phanerogam visible, right? So it is Yes. again divided into how many parts? Two Two parts. parts. Two parts. First, here we will see that everything is vascular, right? So here vascular plant is divided into two parts, gymnosperms and angiosperms. Angiosperm is further divided into dicot and yes. So is there any doubt in this classification? No, ma'am. Okay, fine. We have also done with the chlorophyceae, that is the green algae, right? So here we are going to draw a table and see what are the differences between these three algae. So it is the easiest way to remember things. Hold on. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Classes, common name, major pigments. These are the important things in this algae. Then stored food, composition of cell wall, habitat, and finally examples. Okay. Okay, ma'am. Is the board is visible to everyone? Yes. Okay, so this is the table in which we are going to learn all these three algae. That is the chlorophyceae, that is the green algae, brown algae, and red algae, right? Depending on the pigment. So in this table, we can study in a easiest way, and also it is very easy to remember. Yes. So first one is chlorophyceae. It's not visible. So first one is chlorophyceae. Then next one is phaeophyceae. And the last one is Rhodophyceae. rhodo. Okay. So in chlorophyceae, what is the common name of chlorophyceae, bacha? Green algae. Yes, it is green algae. And what are the pigments, major pigments that we have studied in A chlorophyceae? and B. Yes, so it is chlorophyll, A and B. And the food is stored in the form of what? Starch, ma'am. Yes, very good. Cell wall of green algae is made up of? Cellulose and pectose. Yes, cellulose and pectose. And the habitat that they are generally living? Aquatic. Yes. In aquatic Fresh also water. there are two types of water, fresh water, marine water. Marine. Okay, marine Yes, water. What is the difference between fresh and marine? The concentration of salt, right? Yes. In marine water, the concentration is more of salt.
So generally, the chlorophyceae are least in fresh water, most amount, and some amount also live in salt water. But mostly they live in fresh water. Okay. And also we have done some examples. Can you tell me the name of green algae? Chlamydomonas, Yes. Volvox, Yes. Cara, Yes. That is Chara Bacha. Chara, okay. Yes. And Eulythrix, Yes. And one important thing, that is Spirogera. Spirogera, yeah, ma'am. Yeah. So one more thing we have studied in the structure of Spirogera, if you all have remember, the structure that is used to store food, that is pyrenoids. Correct? Yes, ma'am. So these are the structures that are used to store the food, and as well as the unicellular algae like spirulina and Spirogera, they are also used as unicellular food supplements by the space travelers. I don't remember that we have discussed this point or not last time. Not discussed, ma'am. Chlorella, no? Okay, fine. So in examples, we can see spirulina, Chlamydomonas. There are a lot of examples. Okay. Volvox is a colonial. So you can write all these things. So are we clear with this? These are the important things of this classification. These are the very important things. That is the common name of chlorophyceae green algae. Major pigments in this is chlorophyll A and B. The food is stored in the form of starch. Cell wall of green algae is made up of cellulose and pectose. Habitat, generally the green algae are found in fresh water, as well as some amount of green algae also found in salt water, like that is marine, correct? And there are a lot of examples that we have studied, like Volvox, which is a colonial. They form the colony. We have discussed this last time, right? They form the colony. Okay. And Chara, we have also saw the structure of Chara. That is a bisexual plant. Oogonium, that contains egg, as well as Antheridium, which contains sperm. Both are present on the same plant only. And we have also seen the structure of Spirogera. In that, the important thing, that is the pyrenoids. They are the storing structures of protein, correct? Yes. One additional thing, प्लांट yes. में प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल रहेंगे तो उसको मोनो क्या बोलते हैं? Ischius, monoecious. Yes, ma'am. Yes, वही बोलते yes, हैं ना? yes, बच्चा. There is a difference. Bisexual flower is means what? जहाँ पे आपका endoecium, gynoecium both are present in the same flower. That is a bisexual flower. And the difference between the monoecious and dioecious, we are discussing about the plant. Okay. So if we are dealing with the monoecious plants, it is like there is one plant, correct? So one flower is there, that is maybe female flower, correct? And the one flower is below, that is the male flower. So you can see both the sexes are present in the same plant, right? So Yes. it is a monoecious plant. And when we are discussing about bisexual flower, so here you can see this is the stigma, style, ovary. So this is the gynoecium and this is endoecium, right? So it is a bisexual flower. Okay. So this is the difference. Yes. And dioecious means what? Mono stands for one, ecious stands for sexes. So monoecious is like both the sexes are present in only one plant. That's why it is called as monoecious. Di stands for two and ecious means again sexes. So in dioecious, two different plants are required for seeing the two different sexes, right? Yes, ma'am. Okay. So is it clear, the first one, that is chlorophyceae green algae? Now the next one is Phaeophyceae, that is the common name of this is? Brown algae. Yes, brown algae. Major pigments in brown algae? A and C. No, BB. A and C. It was correct, bacha. A and C. As well as here one another additional pigment also present, that is called as fucoxanthin. Okay? Yes, ma'am. It is fucoxanthin. So chlorophyll A and C plus fucoxanthin. These are the three pigments responsible for the brown color of this brown algae. And the food is stored in the form of mannitol as well as laminarian. So mannitol and laminarian. Is it clear? Yes.
The cell wall composition of brown algae is made up of cellulose and algae plus algae. So these are the two components that is responsible in the formation of cell wall of this brown algae. The habitat of this brown algae, they generally live in actually salt water. Rarely they found in fresh water. Okay, so generally live in marine, you can say, or salt water also you can write. Rarely in fresh. Okay. Yes. So examples of this brown algae, we can see Laminaria, Sargassum. After this table, we are going to just see the detailed structures of all the examples and some additional points also. Okay, these are the very important point. That is, it is the box from where generally the question is asked, like the stored food, cell wall composition, major pigments. Okay, these three are very important. Examples we are going to discuss further, and also we are going to see the structure of examples, but these things are very important. So is it clear, brown algae? Yes, ma'am. What about others? Yes, ma'am. Sakshi, Bismi, Yes, Mahendra, miss. Gayatri. Okay. So please be active. Online lecture doesn't mean you are going to just all lecture on karke having a sleep. Okay. So Yes, finally, ma'am. the last algae is our Rhodophyceae. That is the common name of this algae is? Red algae. Yes, red algae. So the pigment responsible in this is chlorophyll A and D. A, D, plus one additional pigment, that is phycoerythrin, that we have discussed last time also, if you all remember. Yes, ma'am. Phycoerythrin. Yes, so phycoerythrin is also the major pigment that is responsible for the red color of this red algae. Okay, and the food is stored in the form of Floridian starch. Cell wall is made up of cellulose, pectin, and one additional things is there. So cellulose, pectin, is it visible to everyone? Yes. Yes. Okay. Cellulose, pectin, and polysulfate ester. So polysO4 is sulfate ester. Okay. Habitat, they also found generally in salt water, rare in fresh water. Okay. Yes, ma'am. So these are the major things about all these types of algae. Three, that is red, brown, green algae. So you can all write all these things in your notebook. Are we done writing, students? Miss, 8 minutes. Yeah, sure. You can take your time. Just write properly everything, okay? Yes, miss. After this, of each part, each algae, we are going to discuss some additional points, as well as we are going to see the structure of examples, like important things.
मैम यस बच्चा। मैम ज़ैंथोफिल पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट कहाँ पे दिखा रहा है आपका बच्चा? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पिगमेंट। कहाँ पे दिखा रहा है? मैम ब्राउन एल्गे में है। ओके, सो पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ऐसे फुकोज़ैंथीन है ना बच्चा, इट इज दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन। ब्राउन पिगमेंट में फुकोज़ैंथीन लिखा हुआ है ना हमने। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ दिस ब्राउन। एज वी नो कि जो आपका क्लोरोफिल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, राइट? सो दिस क्लोरोफिल, जो आपका क्लोरोफिल है ना, ये आपके तीनों अलगे में इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज अलगे इज ऑल्सो समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रोडक्शन। ओके, तो क्लोरोफिल जो आप देख रहे हो ना, ए बी, ए सी, ए डी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस फॉर सम अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और जो ये आप मेजर दूसरे पिगमेंट्स देख रहे हो ना, फुकोज़ैंथीन, फाइकोइरिथ्रिन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ दिस algae। इसीलिए तो इनका अलग नाम है ना, एज कंपेयर टू दिस। हियर यू कैन सी देयर इज नो एडिशनल पिगमेंट, राइट? Here it is only chlorophyll A and B, so that's why it is the only green algae, whereas in this other two you can see some additional pigment are there like fucoxanthin. Here so it is brown algae, and here phycoerythrin that is responsible for the red color, so that's why it is red algae. यस यस मैम। तो आपके फुकोज़ैंथीन के वजह से एक्चुअली वो ब्राउन कलर इम्पार्ट होता है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द algae is brown बट वो algae. भी फोटोसिंथेसिस करता है ना मैम? यस, सम अमाउंट। मतलब अभी अगर आप अलगे का प्लांट से कंपेयर करोगे ना, सो वाटर में जो भी आप देखते हो जनरली अलगे की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, राइट? अलगे इज प्रेजेंट इन वाटर, यू कैन सी ऑलमोस्ट पूरा कवर अप होता है। सो विद द वहां पे आपका अलगे सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस दिखाता है, लेकिन जो ये एडिशनल पिगमेंट्स है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर। ओके, डन बच्चा लोग? Yes, miss. यस मैम। एवरीवन? Yes. यस। Okay. So now we are going to see some additional features that we have already covered everything about green algae. One thing was pending, that is the spirulina and Spirogyra, that are the unicellular algae used as food by space travelers. Okay. So you can write that is chlorella and spirulina are the unicellular algae. Okay, they are the unicellular algae used as food by space travelers. जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं ना, अब they cannot carry दाल भात रोटी भाजी with them, right, in space. So these are the algae that are used as food supplements in space. That is chlorella and spirulina. Both are unicellular algae used as food supplement by the space travelers. So this is one important point. And we are also done with the pyrenoids, right? They are responsible for storing protein. Yes. Done this? Yes. Yes, miss. So it was an additional point with respect to green algae. Now the next one is brown algae. That is BA. Brown algae, the additional point is the body of brown algae is differentiated into, you can see the structure, we can see the structure of laminaria. That is the example of this brown algae. So the name of this is laminaria with respect to the lamina. I hope everyone know what do you mean by lamina. Yes. क्या होता है बच्चा lamina?
लीफ, आपका जो लीफ का ये स्ट्रक्चर्स होता है ना, there are different types of lamina, right? Leaf can be ma'am. like this structure or it can be like this. Okay, so this outer structure, this whole flattened structure is called as lamina. Okay, so इसका नाम laminaria क्यों दिया है? Just because of its structure. So generally your brown algae, it is differentiated into different structures. The first one is hold fast. The name of this structure is hold fast. So with respect to the name, you can see it is used for the purpose of holding, right? So that's why Yes. the name of this thing is hold fast. The name of this thin structure, it is stipe. Just by for holding this large flattened structure, and it is connecting this flattened structure lamina with the hold fast. Okay, and finally this is called as lamina. So you can see it is a leaf-like structure divided into three. Your lamina is also responsible for photosynthesis. So body is differentiated into hold fast, and this is a stalk that is called as stipe. And finally, this is a leaf-like organ called as lamina, responsible for photosynthesis. Okay. Okay, ma'am. The another name of this is a lamina-like structure called as frond. Frond. Sorry. It is very easy, the structure of laminaria. The name of itself laminaria because it shows the structure similar to the lamina, that is a leaf-like structure you can see. And as we know, leaf is responsible for the purpose of photosynthesis. Here, the frond that is show the leaf lamina-like structure or leaf-like structure, it is also responsible for the photosynthesis. Hold fast is there for the holding purpose, and stipe is connecting the hold fast with lamina. Yes, ma'am. Okay. So we can write also brown algae is divided into three different parts. The structure of this. First one is hold fast, stipe, and lamina, or you can say frond. And below we can write hold fast is responsible for holding the whole structure. Stipe is connecting the hold fast with lamina, and frond is responsible for photosynthesis. Done, bacha? Done, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The brown algae consists of three things. Are we done with this? Have you all Yes. written this? Yes. Okay. So now, next one more important thing about brown algae. That is, some species of brown algae, some species of brown algae are responsible for production of hydrocolloids. Do you know what do you mean by hydrocolloids? Hydro stands for water. Always you can see wherever it is written hydro, you can just connect it water. Okay. Colloids mean
gel-like structure. Okay. So hydrocolloids like आपका brown algae is responsible for the production of hydrocolloids. Hydrocolloids मतलब क्या होता है बच्चा? It is a substance that yield a gel-like structure आपका form करता है with water. Okay. Yes. So in bracket you can write form a gel with water. Okay. Examples of this hydrocolloids are ectocarpus and fucus. So ectocarpus and fucus are responsible for the production of hydrocolloids, that is gel-like structure yielding. Done, bacha? Yes, ma'am. Okay. Is there any doubt till here to anyone? No, ma'am. Okay. So now we are going to cover some additional points of red algae. So first we are going to see the differentiation of the body of red algae. Are we done with the examples of brown algae? Laminaria, Porphyra. Please write Porphyra also in an example of brown algae. And just now we have written ectocarpus and fucus, that are also examples of brown algae only. Just add one extra, Porphyra. Okay, that is also important along with Laminaria. Porphyra. Okay. Porphyra red algae, na? Brown algae, bacha. Okay, ma'am. Porphyra, Laminaria, Sargassum. Actually, as I told you earlier also, there is a lot of difference in your NCERT and in your state board. So अगर आप NCERT के respect पे देखते हो ना, so आपका जो porphyra, it is given in red algae, responsible for red pigment. But in your textbook, it is written in the example of brown algae. So as I told you earlier कि जहाँ पे भी ऐसा difference होगा, I will let you know the difference. So अगर आपको state में मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये porphyra का एग्जाम्पल आ रहा है तो you should go with the brown algae. But अगर आप नीट के पेपर में आपको same question is repeating, so porphyra is the example of red algae. Okay? Yes, ma'am. Because वहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक जो नया वाला टेक्स्ट बुक आया ना, न्यू सिलेबस, बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे मिस्टेक्स है, जहाँ पे चीजें बहुत ही अलग दी है. अगर आप एनसीईआरटी से देखोगे तो मैंने ये पहले ही शायद से आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, राइट? हाँ मैम. दैट आई विल टेल यू कहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा. हाँ बच्चा बोलो, किसी ने बुलाया? नहीं. ओके. सो porphyra अगर आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में एग्जांपल आ रहा है, सो इट इज इन योर स्टेट बोर्ड, इट इज गिवन इन एज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन algae. अगर आप नीट के लिए अपियर कर रहे हो, वहां पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेड algae. ओके. Yes. So now red algae, the plant body in red algae. We have seen some examples of red algae. Yes or no? Do we know an example of red algae? No, ma'am. No. Okay. So red algae, the body of red algae is thalloid. Okay. Thalloid means what? Thallus-like body. Nothing is properly differentiated. We are unable to differentiate things, right? As well as the additional point here is red algae are used as solidifying agent. Solidifying means what? To convert the things in a little solid-like structure. Okay, like gel-like structures again. So it is used as solidifying agent in tissue culture medium. You can write just in tissue culture. Okay. Yes. So your red algae are used as solidifying agent in tissue culture. That is example
that is the name is agar agar. Okay. So red algae are used as solidifying agent in tissue culture, that is agar agar. So agar agar basically is used as solidifying agent in tissue culture. Porphyra is given in both the examples, and red algae also it is given an example in your state book, and as well as in brown algae also it is written there. So do one thing, आप पोरफायरा इसमें ब्राउन algae में लिखो ही मत, ठीक है? और आपके जो टेक्स्ट बुक है ना ब्राउन algae में, वहां से पोरफायरा का एग्जाम्पल भी आप कट कर दो. ओके ओके मैम. एंड राइट इट इन द एग्जाम्पल ऑफ रेड algae ओनली. बहुत मिस्टेक्स है हर एक चैप्टर में, ऐसा नहीं सिर्फ इसी चैप्टर में, ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स में बहुत ही मिस्टेक्स हैं यहाँ पे. सो एग्जाम्पल्स ऑफ रेड algae are porphyra, glaciolaria, polycyphania. These are the 3 important examples. मैम हाँ बच्चा. मैम अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जाए बोर्ड्स में तो फिर चलेगा क्या? मतलब हम जैसे बोर्ड्स में बच्चा इट इज लाइक कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब आपका बोर्ड्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, आंसर्स आर चेक विद रिस्पेक्ट टू योर स्टेट बुक, और आपके स्टेट बुक में बहुत सारी चीजें बहुत अलग भी एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी. सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स मूड कि अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर करके जाते भी हो, कंटेंट एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है. सिर्फ एनसीईआरटी करके आप जा सकते हो, बट अगेन आई सेड इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर मूड, जो आपका पेपर चेक करेगा. क्योंकि कैसा होता है, उनको एक शीट मिली जाती है, उसके रिस्पेक्ट पे ही वो आंसर चेक कर सकते हैं, भले आपने सारी चीजें राइट लिखी है. 75% सेम है, कंटेंट इज सेम, इट्स 75%. तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी ऑल्सो. तो आप एक काम करो, जैसे अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हो, आई गेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, राइट? यस मैम. सो आपका मेन फोकस वहां पे, तो यू आर गोइंग विद द एनसीईआरटी प्रॉपरली, राइट? हाँ तो आप एक काम कर सकते हो, आप एनसीईआरटी रेफर करो, मतलब पूरा प्रिपरेशन एनसीईआरटी से ही करो, बट जस्ट रेफर वंस और ट्वाइस विद द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. जो आपका स्टेट टेक्स्ट बुक है ना, उसको भी आप 1-2 बार रेफर कर लो. सो दैट विल बी गुड, ताकि जो पॉइंट्स मिसिंग है ना वो आपका यहाँ से कवर हो जाए. क्योंकि बहुत सारी चीजें एडिशनल भी दी है आप लोग के टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटीज में नहीं है. तो आपकी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगे. आप प्रॉपर प्रिपरेशन अपना एनसीईआरटी से करो, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स यू कैन जस्ट रेफर विद द स्टेट बुक आल्सो. सो आर वी डन विद दिस रेड algae, some additional points? यस. Now the next one is bryophyta. That is another name of bryophyta is what? It is called as amphibian of the plant kingdom. Why? So amphi means it is surviving in both, living in both, right? यस. कैसे कंडीशन में बच्चा ये रहता है? लिविंग विद बोथ मीन्स व्हाट? अब उसके पास पैर तो है नहीं ना, थोड़े टाइम लैंड में रहेगा, थोड़े टाइम उठ के जाके एक्वाटिक में रहेगा, फिर लैंड में, फिर एक्वाटिक. सो लिविंग विद मीन्स बोथ, मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? नियर टू वाटर. ओके, एनीथिंग एल्स? नियर टू वाटर भी रहेगा तो इट इज लाइक, मतलब यू आर सेइंग कि it is absorbing the water and as well as present on the land, right? Yes, near the water but on the land. Okay, okay. Anything else? Anyone? What about others? बाकी लोग नींद में हैं? नहीं मिस. तो बोलो बच्चा. सो बेसिकली आपका जो ब्रायोफाइटा, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस जब हम लोग डेवलपमेंट स्टेजेस कर रहे थे. आफ्टर थैलोफाइटा वी वर डिस्कस विद दिस ब्रायोफाइटा एज वेल, कि आपका ब्रायोफाइटा, सॉरी, मॉइस्ट एरिया. यस, इट लिव्स इन मॉइस्ट एरिया. लाइक हमने डिस्कस किया था समथिंग कॉल्ड एज कीचड़, राइट? इट इज मीन्स मॉइस्ट. द कीचड़ इज लाइक व्हाट? एक तो आपको वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे प्रेजेंट होता है, and it is also having water content, correct?
तो यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा जनरली लिव्स इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस because it requires water for fertilization purpose, for the reproduction purpose. Okay, they need water for fertilization. तो fertilization नहीं होगा, reproduction नहीं होगा, तो उनका life cycle ही complete नहीं हो पाएगा, right? So basically bryophytes आपके terrestrial plants होते हैं, but they live in moist, जो मैंने आपको last time discuss किया था, मतलब दलदल टाइप होता है ना, कीचड़ टाइप, moist जगह जहाँ पे नीचे land पे भी water like substance है. Okay, नियर द सी भी होते हैं, और अगर जहाँ पे सी पास में है भी नहीं और सिर्फ अगर वो प्रॉपरली लैंड पे, तो ऐसी जगह जहाँ पे वाटर कंटेंट आपका लैंड पे प्रेजेंट होता है. ओके, सो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Bryophyta lives in moist and shady places and require water for fertilization for reproduction purpose. Bryophyta अब भी हम start कर रहे हैं, correct? हाँ मैम. So we are going to write some points. Bryophyta lives in moist and shady places, require water for reproduction, hence called amphibians. We are going to discuss more and write less. Okay, so please pay attention, be attentive. ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दिमाग में रखना है, ना कि बुक में. Okay, it is also called amphibians, or we can also say amphibious plants. Okay, Yes. so Bryophyta live in moist and shady places, require water for reproduction, hence called as amphibious plants. Life cycle of Bryophyta consists of two stages: sporophytic and gametophytic. Okay, has we discussed about this sporophytic, gametophytic? आप लोगों को बताया मैंने gametophyte क्या होता है? Diploid. Yes, ma'am. बताया, right? हाँ. जैसे आपका flower है, roots है, so this is gametophytic, that is haploid. All this upper structure is sporophytic, that is diploid. Okay, okay, fine. Done, it is clear. So life cycle of Bryophyta consists of two, sporophytic and gametophytic. दोनों भी phases आपका यहाँ पे involve है. और प्लांट बॉडी कैसे, अगेन यहाँ पे थैलॉइड और लीफी, क्योंकि अभी तक कुछ भी ट्रू रूट्स ट्रू लीव्स करके यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. ओके, सब रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट है. Yes, ma'am. सो आपका यहाँ पे गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है, here it is representing the leafy stage. So gametophytic stage पे we can see leafy stage. Okay, and sporophytic में हमको क्या दिखेगा? Spores. Do we know the difference between seeds and spores? Yes, ma'am. क्या होता है बच्चा? Ma'am, spores diploid नहीं haploid होता है ना, and seed is diploid. Yes, that is correct. And one more thing, seeds are the मतलब वो sexual reproduction Sexual, के आपके yes. result And होते these हैं, are the whereas spores asexual. are asexual. Yes, exactly. What about others? समझ में आ रहा है बच्चा लोग आप लोग को? Yes, miss. हाँ, miss. So sporophytic में we can see spores and gametophytic में we can see the leafy stage are there. So bryophytes में भी as we have discussed earlier, यहाँ पे कोई भी true root, true leaves वगैरह कुछ भी present नहीं होगा. In bryophytes we can see root-like structures are there, that is called as rhizoids, which are unicellular. So in plant bryophytes body we can see root-like structures called as rhizoids. आपके रूट्स भी यूनिसेलुलर ही होते हैं स्ट्रक्चर में. ओके,
सो इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो आपके राइजोइड्स भी कैसे होने वाले, दे आर यूनिसेलुलर इन लिवरवर्ट्स। आपका ब्रायोफाइट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होने वाले, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। सो रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोइड्स। यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो इट इज यूनिसेलुलर और multicellular. Unicellular in case of sorry liverworts. दिख रहा है सबको? Yes. Okay. It is rhizoids are unicellular in case of liverworts, and the rhizoid, that is the root-like structure, it is multicellular in case of mosses. So यहाँ पे बॉडी में अभी स्पेस नहीं है तो हम इतना ही लिखेंगे। अब रूट्स का काम क्या होता है बच्चे लोग, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, करेक्ट। इसके अलावा आपका जो ये लेवल ग्राउंड सबस्ट्रेटम जिसको हम कहते हैं, आपका जैसे ये ग्राउंड है, सरफेस है, तो यहाँ पे रूट क्या करेगा, फिक्सेशन दिखाएगा, करेक्ट। चीजें फिक्स होंगे इस पे। सो हियर जो आपका राइजोइड है, इट इज आल्सो गोइंग टू, दे आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर, सो दे आर आल्सो गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ, जो कि रूट के फंक्शंस होते हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एज वेल एज दूसरा क्या होता है रूट का काम, फिक्सेशन और एनकरेज टू द सबस्ट्रेटम। आपका जो सबस्ट्रेटम है इस पे प्रॉपर क्या हो सके, वो फिक्स हो सके। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, आर वी डन? Yes. Yes, ma'am. So now the bryophyta is divided into two parts, that is liverworts and mosses. चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं, समझ में आ रहा है बच्चा आप लोग को? समझ आ रहा है। हाँ, Okay, miss. very good. So here bryophyta is divided into two parts. One is liverworts and the another one is mosses, or you can say moss. Okay, so mosses का दूसरा नाम है musci, and liverworts is also called as hepaticae. Why? Any guesses? Hepaticae, हम hepatic word का भी यूज करते हैं whenever we are talking something in reference to liver. Okay, so the word is hepaticae. जैसे हम हाइड्रो बोलते हैं तो वाटर का लिंक हो जाता है ना, सिमिलरली अगर हम कोई भी, जैसे कि हिपैटिक लोब्यूल सुना है कभी जोलॉजी में, हिपैटिक लोब्यूल, गैमेटोफाइट लिवर जैसा दिखता है ना? यस एग्जैक्टली। सो लिवर वर्ड्स में फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी, इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं ब्रायोफाइटा के, दे आर कॉल्ड एज लिवर वर्ड्स। ओके, सो वी कैन राइट लोअर मेंबर्स आर लिवर वर्ड्स। ओके, लोअर मेंबर किसके बच्चा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। यस, अब ये लोअर मेंबर है, मतलब मैंने आपको लोगों को क्या बताया, क्या सिखाया कि जब भी हम कोई भी ट्री डायग्राम बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इट इज मोर डेवलप एज कंपेयर टू इनिशियल वाला पार्ट, राइट। तो अगर यहाँ पे हमने जो ट्री डायग्राम बनाया, क्लासिफिकेशन लिखा है, सो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ज्यादा डेवलप है दोनों में से? मॉसेस। Yes, very good. Mosses is more developed as compared to liverworts because it is according to the time that is passes, right? तो आपका जो liverworts है, they are the lower members as well as primitive group. Primitive like old, okay, as compared to mosses. So it is less developed. Are we clear with this? Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पे अभी आपका जो gametophyte है, वो कैसा plant body represent करेगा? Flat. Gametophyte represents flat body called thallus. यहाँ पे भी बॉडी कैसा है? थैलस. नथिंग इज प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड. ओके, Yes. योर थैलस इज गोइंग टू बी green in color as well as dorsy. Dorsy ventral समझते हो बच्चा क्या होता है? लीफ देखा है सबने? डॉर्सल साइड सबको पता है, बैक साइड, वेंट्रल इज द फ्रंट साइड. तो कोई भी चीज जो एकदम फ्लैट होती है ना, दैट यू कैन सी इट इज बोथ द साइड्स इज विजिबल, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल. जैसे आपका लीफ का स्ट्रक्चर, आप लीफ कैसे देखते हो हाथ में? इट इज फ्लैट, सो इट इज फ्लैट एंड डॉर्सी वेंट्रल यू कैन सी. ओके,
Yes, ma'am. So आपका Yes. thallus कैसा है? It is green, dorsiventral plus prostate मतलब erect, dorsiventral and unicellular सिंगल सेल स्ट्रक्चर है किसके? राइजोइड्स के. आपके रूट्स भी यूनिसेलुलर ही होते हैं. सो लीवरवर्ट्स के एग्जांपल्स हैं रिक्सिया एंड मर्चेंटिया. Is there any doubt in liverworts, बच्चा? No, ma'am. So another name of liverworts is hepatic C because we are referring this liver. Bryophyta is divided into two, liverworts and mosses. So lower members, or you can say primitive group of Bryophyta is called as liverworts. Gametophyte represents a thallus body. The thallus is green, flat, dorsiventral, and also shows the presence of unicellular root-like structures that is called as rhizoids. Yes, ma'am. Done this much? Yes. Okay. Before moving to the mosses, आपका liverworts में ही यहाँ पे एक और है that is called as hornworts. Okay. liverworts में एक और है bifurcation नहीं बोल सकते मतलब some additional thing. mosses में अभी रफ कर दूं. हाँ. hornworts लिखने के बाद में then we'll move to mosses. hornworts नाम से क्या समझ में आता है बच्चा? horny structure. Yes. horn सबको पता है. Yes. So hornworts, that is the another name of his. Anthoceros भी बोलते हैं इसको. Okay. Another name for hornworts is anthoceros. तो यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या? इसके मेंबर के भी जो थैलस होते हैं ना वो फ्लैट ही होते हैं. बट थैलस along with flat and unicellular, it also shows the presence of horny structures. Okay. horny structures present करता है जिसको sporophytes बोलते हैं. इसलिए इसका नाम क्या है? hornworts. सो hornworts में हमने क्या देखा बच्चा? जो आपका बॉडी कैसा? इट इज थैलस. फ्लैट है, थैलस है, राइट? बट थैलस क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस ए हॉर्नी स्ट्रक्चर. हॉर्नी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट्स. Okay. Okay. So thallus produces a horny structure called as sporophytes. इसीलिए इसका नाम कैसा है? hornworts. An example is also important, that is anthoceros. एंथोसिरोइट भी बोलते हैं इसको, एंथोसेरोस भी बोलते हैं. These are the important things in Bryophyta. नीट के पास पर्सपेक्ट से भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. जैसे कि लिवरवर्ट्स में आपका एग्जांपल रिक्सिया एंड मर्चेंटिया. इसमें तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं. लोअर प्रिमिटिव ग्रुप है, करेक्ट. बॉडी क्या है? थैलस है. थैलस क्या दिखा रहा है? यूनिसेलुलर राइजोइड्स, राइट. एंड देयर एग्जांपल रिक्सिया एंड मर्चेंटिया. There is nothing special about this and it is easy to understand also, right? Yes. hornworts में आपको एक चीज याद रखना है, नाम से ही चीजों को कनेक्ट करना है इन बायोलॉजी. ओके, स्पेशली इन माय लेक्चर. तो नाम से आधी ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाती है. हियर इट इज hornworts मींस हॉर्न मतलब क्या? हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो थैलस है इट इज रिप्रेजेंट, इट इज प्रोड्यूसिंग अ हॉर्नी स्ट्रक्चर एंड दैट हॉर्नी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट्स. देन उसमें एग्जांपल हमारा एंथोसेरोस. Are we done with this? Yes, ma'am. Any doubt or difficulty till here to anyone? No, ma'am. No. Okay. So now we are moving to mosses. Mosses, another name of mosses are musci. Okay, so mosses as compared to liverworts, they are the advanced, right?
बिकॉज लीवरॉइड्स आर द प्रिमिटिव, तो मॉसेस आपके क्या हो गए, एडवांस हो गए। सो यहाँ पे आपका अभी जो मॉसेस है ना, उसमें जो गैमेटोफाइट फेस है इसका लाइफ साइकिल का, वहां पे 2 स्टेज है। ये दोनों स्टेजेस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है नीट के भी और स्टेट के दोनों पर्सपेक्टिव से। सो गैमेटोफाइटिक फेस, as sporophytic, gametophytic, it is clear to everyone, right? Yes, ma'am. So in mosses, gametophytic phase is divided into 2 different phases. दो अलग stage में you can say it is divided 2 stages. One is protonema stage. This is the most important part of this mosses, okay? Protonema stage, and the another one is leafy stage. You can write stage. ओके। सो आपका मॉसेस में 2 स्टेजेस होते हैं, पहले तो स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक, जो सॉरी 2 फेसेस होते हैं, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। जो गैमेटोफाइटिक फेस है आपका, वो 2 स्टेज रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ओके। सो अभी आपको जो प्रोटोनेमा सॉरी जो प्रोटोनेमा स्टेज है बच्चा, वो कैसा है, इट इज प्रोस्टेट, मतलब इरेक्ट, ग्रीन इन कलर, ब्रांच के साथ साथ इट इज फिलामेंटस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल। So पहला तो प्रोटोनेमा स्टेज is also called as juvenile phase और juvenile gametophyte, okay? Juvenile phase और juvenile gametophyte। juvenile मतलब समझते हो young stage, juvenile stage हम plants के बात करते हैं, मतलब जो young childhood stage होता है ना, it is considered as juvenile, okay? Getting my point? Yes, ma'am. So first of all, it is divided into 2, protonema stage, that is also called a juvenile phase, and the another is leafy phase. अब यहाँ पे leafy stage, पहले हम इसमें देखेंगे, लिखेंगे कि protonema stage आपका होता कैसा है। So first of all, it is branch, filamentous and produce buds. ये 2-3 चीज important है। So green in color, और कैसा, it is branched, filamentous and produce buds। यहाँ पे स्पेस कम था, तो कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी, ओके? Okay, ma'am. So the 2 phases are there, sporophytic and gametophytic. In gametophytic phase, it is divided into 2 stages, protonema stage and leafy stage. Protonema stage is also called as juvenile gametophyte stage. And protonema stage आपका generally है क्या? It is green in color, branch, filamentous, and it consists or produce buds. This is the most important part, okay? Yes, ma'am. Done this much, बच्चा? Yes. Yes. Okay, just against to this, आपका leafy stage कैसा? It is erect and shows a stem-like structure called as cauloid. इधर space नहीं है, so मैं यहाँ रफ करके लिखूं? हाँ, ma'am. We are done with all this, right? So we are talking about leafy stage. So protonema का we are done. Leafy stage आपका यहाँ पे जो बर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं ना बच्चा, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, राइट? तो स्टेजेस मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेज से कंप्लीट होकर नेक्स्ट स्टेज में वो एंटर करेगा, राइट? तो यहाँ से जो भी बर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, यू कैन सी हियर इट इज रिटन ओवर हियर, राइट? फिलामेंटस एंड प्रोड्यूस बर्ड्स। तो पहले फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, प्रोटोनेमा स्टेज में बर्ड्स प्रोड्यूस हुए, करेक्ट? नाउ फ्रॉम दिस बर्ड्स इन नेक्स्ट स्टेज, लीफी स्टेज, द लीफ आर गोइंग टू गेट प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ, ma'am. So we can write in leafy stage, it is produced from the buds. कौन से buds? जो प्रोटोनेमा स्टेज में प्रोड्यूस हुए हैं, ओके? हाँ, ma'am. दूसरा आपका लीफी स्टेज में इट शोज, okay, so leafy stage shows stem like structure
like structure called as cowlid. Okay, and it also shows main axis, or you can say directly leaf like structure that is called as phylloid. Okay, यस मैम. तो कुछ एडिशनल दिखा आपको? अभी तक हम लोग सिर्फ राइजोइड्स पढ़ रहे थे, राइट? सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे. यहाँ पे समथिंग एडिशन हमको देखने मिला. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉइल. लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फाइलॉइड. और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी ऑलरेडी नो क्या बोला जाता है? Rhizoids. यस, एग्जैक्टली. सो राइजोइड्स तो पहले से हम 2 में देखते आ रहे हैं, वो प्रेजेंट है. एडिशन इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉइलॉइड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाइलॉइड एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स. मैम ये सब 2n है ना कि n है? सॉरी, ये सब डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? दैट विल डिस्कस लेटर, डोंट वरी. ओके, ओके मैम. गैमेटोफाइट है ना बच्चा ये. तो गैमेटोफाइट yes, कैसा yes. होता है? It is N. Haploid, We yeah. are discussing the stages of gametophyte. So it is N. So now the most important thing, आपका जो leafy stage है, this is the most important thing. It is going to bear sex organs. Okay. This stage bear sex organ. Done? Yes. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा यहाँ पे, दैट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब दोनों रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वो विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन और बडिंग. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ दिस मस्काई और मॉसेस इज फनेरिया और स्पैग्नम. both the things we can write. Sphagnum का कुछ additional points भी है that we will discuss in next lecture. इतना clear है सबको बच्चा लोग? Yes. हाँ मैम. Yes. Okay. So we are done for today. Next lecture we are going to revise all these things again. And इसके जो examples उसका हम detail में study करेंगे. I want to tell you some additional points with respect to sphagnum. And we'll proceed for pteridophyta. Okay. So we are done for today. Thank you so much. Bye bye. Take care everyone. Bye, Miss. Thank you.